हेलो एवरीवन। और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं हमारा ग्रामर और वोकैबलरी का पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। करेक्ट। तो अभी हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2 जिसमें है सेंटेंस टाइप्स, जिसमें हम देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होता है, ये सब हमको देखना है आगे। पहले देखते हैं ग्रामर। बहुत लोगों का कंफ्यूजन है कि ग्रामर क्या है, वोकैबलरी क्या है। मोस्ट पीपल टेक इट मीनिंग द सेम थिंग। ऐसे नहीं है। ग्रामर आर द सेट ऑफ रूल्स, जो स्ट्रक्चरल रूल्स होते हैं गवर्निंग द कॉम्पोजिशन ऑफ क्लॉजेस, फ्रेजेस एंड वर्ड्स इन एनी गिवन लैंग्वेज। जो रूल्स होते हैं, ये क्लॉज है, ये फ्रेज है, ये वर्ड्स है, इसको इंटीग्रेट कैसे कैसे लिखना है, कैसे बोलना है, देयर आर रूल्स, तो उसे कहते हैं ग्रामर। करेक्ट। सो इस ग्रामर में देर आर सम वर्ड्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या है कॉन्सेप्ट्स, वर्ड्स? पहला है सिंटेक्स। सिंटेक्स का मतलब क्या है? सिंटेक्स मीन्स अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस। आपको वर्ड्स पता है, बुक, बेंच, ऑन, केप्ट, तो सिर्फ वर्ड्स है। लेकिन ये वर्ड्स को वी हैव टू अरेंज देम इन प्रॉपर सेंस so that in a proper manner there are rules of arranging these words in a proper manner so that it makes sense. Correct? तो syntax क्या है? It is the arrangement of words and phrases to create well formed sentences in a language. Language क्या है? Language is words. ये words को हम sentences में डालते हैं so that it makes sense. Correct? So ये जो words, phrases को arrange करके एक sentence में डालेंगे ताकि it makes sense, that is syntax. फिर है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ थिंग्स इन अ पर्टिकुलर फॉर्म, शेप, स्ट्रक्चर। उसको फॉर्म कैसे देना है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, पैसिव है, एक्टिव है, स्ट्रक्चर उसको कैसे देना है, तो दैट इज मॉर्फोलॉजी। फिर है सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स। अभी लिंग्विस्टिक्स क्या है? लिंग्विस्टिक्स का मतलब है द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। तो इन द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सिमेंटिक्स। सो लैंग्वेजेस में वर्ड्स होते हैं, उसके मीनिंग्स होते हैं, सेंटेंसेस के मीनिंग्स होते हैं। सो इट इज़ द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स विच डील्स विथ अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, दैट इज सिमेंटिक्स। फिर है फोनोलॉजी। अभी फोनोलॉजी क्या है? फोनोलॉजी इज द साइंस, जो आपने सुना होगा ये फोनिक्स, फोनेटिक लैंग्वेज। तो हाउ वो वर्ड का साउंड कैसे है, उसको कहते हैं हम फोनिक्स। इज द साइंस ऑफ स्पीच साउंड्स इंक्लूडिंग द हिस्ट्री एंड थियोरी ऑफ साउंड चेंज इन अ लैंग्वेज और टू और मोर रिलेटेड लैंग्वेज। तो फोनेटिक्स की क्लास लगाई तो वर्ड को हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं, दैट इज बेसिकली द साउंड ऑफ द वर्ड. And then is pragmatics, which is the branch of linguistics. Linguistics, I told you, is the study of languages, dealing with the language in use and the context in which the words are and languages are used. So किस context में कौन से words are used in the language. So pragmatics, that is called as pragmatics. फिर जाते हैं to अभी ये जो सब चीज़ें हैं ये हमने स्कूल में से हम पढ़ते आए हैं। फ्रेजेस क्या होते हैं, क्लॉजेस क्या होते हैं, सेंटेंसेस क्या होते हैं, एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, हाउ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, ये तो हमने स्कूल से पढ़ा है। करेक्ट। सो यू आर ऑल अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। लेकिन सो ये कैसे, दिस इज जस्ट लाइक अ रिविजन ऑफ वॉट वी हैव ऑलरेडी बीन डूइंग फॉर सो मेनी ईयर्स। तो फ्रेज किसे कहते हैं? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सेंस but not complete sense. Correct. It cannot start alone but it can be used as a sentence in a sentence. For example, अगर हम देखते हैं in the north. In the north क्या है? In the north makes sense लेकिन incomplete लगता है ना। in the north क्या? a yellow dress. क्या? हाँ yellow dress, हाँ dress है, yellow है, लेकिन क्या? who is wearing it, कैसा है, क्या है, तो है, it makes sense but it does not make complete sense. इसे कहते हैं phrase. at 5 o'clock. at 5 o'clock क्या होने वाला है at 5 o'clock? सो इट इज मेकिंग सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। तो उसके आगे पीछे कुछ तो हमको डालना चाहिए सो दैट इट मेक्स सेंस। सो दैट इज अ फ्रेज। करेक्ट। देन इज अ क्लॉज। तो क्लॉज क्या होता है? क्लॉज आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. करेक्ट. तो इट मेक्स कंप्लीट सेंस ऑन इट्स ओन क्योंकि उसमें है टू पार्ट्स.
एक प्रेडिकेट सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है. तो मेन क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है. करेक्ट. तो मेन क्लॉज क्या होता है? मेन क्लॉज हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट एंड कैन स्टैंड एज अ कंप्लीट सेंटेंस. ही हैज अ चेन ऑफ गोल्ड. तो अगर हम देखते हैं चेन ऑफ गोल्ड, तो ही हैज अ चेन ऑफ गोल्ड. किसके पास है चेन ऑफ गोल्ड? ही हैज अ चेन ऑफ गोल्ड. तो इसमें सब्जेक्ट भी आ गया है और प्रेडिकेट भी आ गया और कंप्लीट सेंस भी होता है इसमें. करेक्ट. फिर है सबऑर्डिनेट. अ सबऑर्डिनेट क्लॉज कंसिस्ट ऑफ अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट but does not make complete sense on its own. Which is made of gold? Which is made of gold? Correct. What is made of gold? इसमें सेंस नहीं है. तो he has a chain which is made of gold. तो अगर हम ये पूरा he has a chain of gold, तो ये as it is can stand alone. ये क्या है? मेन क्लॉज है. Which is made of gold, ये उसका अगला हिस्सा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है. लेकिन दैट विल नॉट मेक कंप्लीट सेंस. अगर हम ये कंप्लीट सेंटेंस अभी पढ़ते हैं, मेन और सबऑर्डिनेट क्लॉज, ही हैज अ चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड, दिस विल मेक कंप्लीट सेंस. तो ये क्या है? क्लॉज है जिसका मेन पार्ट है विच कैन स्टैंड अलोन, लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन. दोनों को एक साथ यूज करना पड़ेगा. फिर है सेंटेंस. अभी सेंटेंस जो हम सबको पता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस टू द रीडर. इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एज वेल एज अ प्रेडिकेट. जो वेंट टू अ स्टोर. कौन गया? जो. सब्जेक्ट कौन है? जो. कहाँ पे गया? वेंट टू द स्टोर. करेक्ट. वेंट टू द स्टोर इनकम्प्लीट होगा, बट जो वेंट टू द स्टोर क्या होगा? कंप्लीट सेंस बन जाएगा. सो इसमें है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. दे आर टू प्राइमरी स्ट्रक्चर्स ऑन विच द सेंटेंस स्टैंड्स. करेक्ट. फिर है सेंटेंस के बेसिक पार्ट्स क्या है वो देखते हैं. तो एक होता है सब्जेक्ट मेन. द पर्सन समथिंग इज स्टेटेड अबाउट और द पर्सन डूइंग समथिंग, उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट. फिर आता है उसका प्रेडिकेट. प्रेडिकेट क्या है? इट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. ओके. सो सब्जेक्ट है द पर्सन, जिसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं. एंड प्रेडिकेट क्या होता है? जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है, दैट इज द प्रेडिकेट. सो राम इज अ वेरी ऑनेस्ट बॉय. तो राम हुआ सब्जेक्ट. इज अ वेरी ऑनेस्ट बॉय, तो इज अ वेरी ऑनेस्ट बॉय इज टेलिंग अबाउट राम. करेक्ट. सो दैट इज द प्रेडिकेट. फिर उसमें होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन होता है, वर्ब्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं. तो ऑल दीज थिंग्स कैन बिकम पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. एग्जाम्पल क्या है? द ट्रेन अराइव्ड लेट. तो ट्रेन क्या है? सब्जेक्ट है. और अराइव्ड लेट कुछ हमें बता रहा है अबाउट द ट्रेन, तो वो क्या है? प्रेडिकेट है. वीर लव्स पिज़्ज़ा. वीर कौन है? सब्जेक्ट है. उसको क्या पसंद है? पिज़्ज़ा पसंद है. तो लव्स पिज़्ज़ा क्या हो गया? सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो उसका क्या हो गया? प्रेडिकेट. अगर हम सिर्फ रखते हैं लव्स पिज़्ज़ा, कौन, क्या, इनकम्प्लीट हो जाएगा. करेक्ट. सो द हाईलाइटेड वर्ड्स टॉक अबाउट द सब्जेक्ट. तो देखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, जो हमने पहले अभी ये जो पार्ट्स ऑफ अ बेसिक पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस देखे. तो उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, it is that which is affected by the action of the subject. शीला kicked what? The ball. तो शीला कौन है? सब्जेक्ट है. kicked the ball प्रेडिकेट है, सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस है. उसमें किसको किक किया? बॉल को किक किया, तो वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. द बॉल हिट राम. बॉल किसको लगी? राम को लगी. करेक्ट. देन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द person or thing that action is done to or done for. I made Neha pasta for lunch. तो इनडायरेक्ट किसके लिए? I made सब्जेक्ट. किसके लिए? पास्ता फॉर लंच. किसके लिए बना है? नेहा के लिए बना है. करेक्ट. लेकिन I have made the pasta for whom? नेहा. So नेहा is the indirect object. We built him a castle on the beach. Who built? We built. Okay. किसके लिए बना है? इसके लिए बना है. तो him is the indirect object. कहाँ पे बना है? On the beach बना है. फिर होता है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन. क्या होता है? The object of preposition is a noun or pronoun that completes its meaning. Example: the cat is looking at the mouse. किसको देख रही है? cat at the mouse. So the mouse
is the object of preposition. The mouse is the object of preposition as it is followed by at. At. He is looking at the boy. At the boy abhi hoga object of preposition because it is followed by at. Then how can I distinguish between an indirect object and object of preposition? वो देखते हैं क्योंकि इसमें confusion हो सकता है. The object of the preposition comes immediately after the preposition. So preposition क्या होता है? Preposition is where you are describing कहाँ पे? On, off, below, above, underneath, beneath, all these are what? Prepositions. So object of preposition comes immediately after the preposition. At. जो हमने देखा in the earlier sentence. The cat is looking at the mouse. The indirect object does not come immediately after the preposition. So the cat is looked at by, the mouse is looked at by the cat. Okay? तो indirect object does not come immediately after the preposition. तो क्या आता है immediately after the preposition? Object of preposition. The indirect object is followed by a direct object, whereas object of preposition does not follow this principle. This is the third way of distinguishing. That is indirect object जो है, it is followed always by the direct object. तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, the cat is looking at the mouse. जब हम देखते हैं, so at the mouse. So the mouse क्या है? It is immediately coming after the preposition at. That is why this has become the object of the preposition. Correct? And not the indirect object. Then we come to verbs. Verbs के बारे में भी हमने already हम detail school से पढ़ते आ रहे हैं. तो infinite verbs होते हैं, modals होते हैं, intransitive verbs होते हैं, transitive verbs होते हैं, auxiliary verbs होते हैं और finite verbs होते हैं. Infinite का मतलब क्या है? जिसका end नहीं है जैसे, और finite जिसका limit होता है उसे कहते हैं हम finite. तो what are finite verbs? A finite verb is limited by its subject. It agrees with its subject in number and person. I am a teacher. He is a teacher. तो limitation आ गया यहाँ पे. Non-finite. It does not change according to the person, number or tense of the subject. Example, infinitive जिसका मतलब है infinite जैसे हम कहते हैं. It is a form of verb used generally like a noun. To is used with it. For example कैसे है? राधा loves to dance. राधा को क्या पसंद है? To dance. So to dance ये बन गया है हमारा infinitive. फिर है participle. A participle is that form of the verb which has the nature of both a verb as well as adjective. And present participle generally ends with ing. Whereas past participle ends with ed. I wanted to meet you. I wanted to meet you. This is to my liking जब हम कहते हैं ing में. फिर है gerunds. Gerund ends with ing and has the features of noun also and verb also. Correct? So these are things which we have already learned when from school. So ये सब जो है it is all revision. तो आपके एग्जाम में आपको auxiliary verbs, modals ऐसे definitions या कुछ पूछा जाएगा? No. In your exams for business correspondence and reporting at the foundation level, you will be given only exercises. There are no, ये जो हमारे chapters है, there are no theory questions on these chapters. These chapters you only have exercises. तो यहाँ पे जो exercises है, these are only going to be changing active to passive, passive to active, direct to indirect, indirect to direct. ये सब आने वाला है आपको. Okay, you will not be asked definition that what is a modal, auxiliary, what is a gerund. ये सब आपको नहीं आने वाला है. तो auxiliary, so these are just kind of revision that we are doing. Then what are auxiliary verbs? These are helping words like auxiliary. They are helping words. The forms of verbs be, am, is, जो हम कहते हैं he is, I am, have and do when used with ordinary verbs to make tenses. She is going for a walk. She is, he is. So these are auxiliary verbs. फिर है modals.
These verbs am, is, etc. are used before ordinary verbs and express meanings such as permissions, possibility, like you may come in, I may go there. So may I come in. So these are acting as models. So they are giving form of permissions या possibilities. He may come for the party. Possibility है. Then is transitive verbs. Transitive verbs are action verbs that express doable activities. The girls जो action is possible, which can be done. So the girl stopped the car. So it's something which is very, very possible to do. Intransitive verbs, it denotes an action that does not pass over to an object. It may express a state or being. She swam a long distance is what? Action. He worked for 10 hours at a stretch. This is showing what? State. There is a flaw in this design. This is telling you about the state of being. So intransitive verbs can tell you about actions, state of being, etc. फिर है phrases. अभी phrases क्या होती है? We told phrases are group of related words that make sense but not complete sense. Like at 5 o'clock, yellow dress. Correct? So they are not making complete sense. So phrases can be prepositional, noun, or related to verbs. Now what is a prepositional phrase? You know what is a preposition? Which is telling you about the position of things, on, between, above, below, all that. So a preposition phrase is a group of words which begin with a preposition and are followed by a noun. She gave the book to him. My car is stuck in the pothole. So she gave the book to him. किसको दी? उसको दी. To him. Okay. My car is stuck where? In the pothole. So these are prepositional phrases. कहाँ पे it is telling about the position. Then is a noun phrase. Phrase that does the function of a noun is a noun phrase. Sarita eats a lot of food. The beach is a great place for a picnic. So these are telling about the nouns. Then is verb phrase. A phrase which consists of a main verb and one more helping verb which is linked together. Sham has eaten a chocolate. Sham was eating a chocolate. तो इसमें past, future ये भी होता है, present भी हो सकता है. Has eaten, was eating ये भी है. So it is eating. Verb is what? Verb is the action word. So eat, eating, eaten. These are verb phrases. Declarative. फिर आते हैं sentences. Types of sentences क्या है यहाँ पे? We come to the types of sentences. So we understood clauses. We understood phrases, and now we are coming to the types of sentences. See, this all, when we are just doing the theory part, this is just as a revision base, as I am telling you. For your exam, you have to understand how उसको practically exercises हम solve करते हैं. So declarative sentences होता है where you are making a statement, you are declaring something. Okay, these statements they make a statement or express their opinion. These sentences can be positive or they can be negative. It is raining. So a statement है, the sun is setting. एक statement आप कह रहे हो, आप एक कुछ opinion share कर रहे हो. Imperative sentences, like they can be in the form of request, advice, suggestion या proposal. Please listen to me. Please can you do this for me? Okay. So please can you advise me on something? So it can be, those are imperative sentences, like a request, like a advice or a proposal. फिर आ interrogative. Interrogation जो होता है like question mark में होता है, like you asking questions, what is your name, where do you live, how much is your salary. So ये questions होते हैं interrogation. और exclamatory which end with an exclamation mark, which are expressing strong emotions and feelings like joy, sorrow, regret, shock, surprise. What a beautiful piece of art. जब हम कहते हैं oh what a beautiful piece of art. Oh, what has he done? You know, surprise, shock, those are exclamatory sentences. फिर होते हैं simple sentences. A simple sentence structure consists of one subject and one predicate and has one finite verb. Aditi ran after her brother.
सब्जेक्ट इज अदिति एंड प्रेडिकेट इज रैन आफ्टर हर ब्रदर। तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट एंड वन फाइनाइट वर्ब, करेक्ट। अदिति फाइनाइट वर्ब कौन होता है, जिसको हम लिमिट दे सके, करेक्ट। सो अदिति रैन, यहाँ पे रैन इज द वर्ब, रैन आफ्टर हर ब्रदर, अदिति इज द सब्जेक्ट, रैन आफ्टर हर ब्रदर। कंपाउंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कंपाउंड सेंटेंसेस, सेंटेंसेस विथ वन और टू मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉजेज इज अ कंपाउंड सेंटेंस। तो एक्चुअली क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस वो होती है जो दो मीनिंगफुल सेंटेंसेस क्लॉजेज होते हैं एंड दे आर कनेक्टेड टूगेदर एंड दे मेक कंप्लीट सेंस. They are joined by coordinating conjunctions such as for, and, but, or, yes, yet, so. Example, the robber decided to escape. ये एक sentence हो सकती है. The police caught him. That can also make two sentences. But what do? You join them together by using but. The robber decided to escape, but the police caught him. So ये two parts making complete sense joined together by a coordinating conjunction but, that is compound sentences. फिर complex sentences. Complex sentence has one main clause and other dependent clause. So what is main clause? That which can stand alone and makes complete sense. Dependent या subordinate clause, that which cannot stand on its own, which cannot make sense on its own. तो एक मेन क्लॉज होता है और अदर डिपेंडेंट क्लॉजेज और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज. द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन परफॉर्म्स टू और मोर इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन अ सेंटेंस. फिर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस. सो इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसा होता है, ईरा डिड नॉट ड्राउन बिकॉज शी वॉज गुड इन स्विमिंग. तो ये क्या है, ईरा डिड नॉट ड्राउन फुल स्टॉप बिकॉज शी वॉज गुड इन स्विमिंग. सो ये क्या हुआ है, ईरा वॉज गुड, डिड नॉट ड्राउन फुल स्टॉप, शी वॉज गुड इन स्विमिंग. ये टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है विच कैन बी जॉइंड टुगेदर. सो दिस इज अ कंपाउंड सेंटेंस, करेक्ट. ईरा स्वैम वेल सो शी केम फर्स्ट. ईरा स्वैम वेल फुल स्टॉप, शी केम फर्स्ट. तो अगेन दीज आर कंपाउंड. तो कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज दैट विच इज कंसिस्टिंग ऑफ वन मेन एंड अदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट विच कैन नॉट स्टैंड अलोन. Okay, so they have to be joined together. And then there is complex compound sentences, which is a combination of both. A sentence with two or more independent clauses plus one dependent clause is called a compound complex or complex compound sentence. Exercises में ये ठीक से दिखाई देगा. अब examples देखते हैं. For simple sentence, Ram ran behind the dog. Ram is the subject and ran behind the dog is the predicate. Compound, the robber tried to run but the police caught him. The two main clauses are the robber tried to run and the police caught him, which is joined together by the sentence but. So robber tried to run makes sense, the police caught him also makes sense, joined together by but. Complex sentence, the boy ran away when he saw the snake. The boy ran away when he saw the snake. So it does not make sense, correct? So that is a complex sentence. The boy ran away is the main clause. When he saw the snake is the subordinate clause. फिर देखते हैं active and passive voice. Again important from your exam point of view. Active voice क्या होता है? Verb is said to be in active voice when its form shows that person or thing denoted by the subject does something that is a doer of the action. Rohit wrote a story on the wall. Who wrote the story on the wall? Rohit. So Rohit is the doer of the action, correct? उसके ऊपर फोकस क्या है, वो सब्जेक्ट है और वॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है. सो रोहित को इंपॉर्टेंस दिया गया है. रोहित wrote a story on the wall. So this is a sentence in the active voice. The doer of the action is given more importance and the sentence begins also with the subject. Passive voice क्या होता है? A verb is said to be in the passive voice when the person or thing denoted by the subject has done something to it. That is, it is the receiver of the action. A song was sung by Sanaya.
Sanaya sang a song. Who is the doer of the action? Subject कौन है यहाँ पे? Sanaya. So Sanaya का focus किया गया, so it is the active voice. लेकिन a song was sung by Sanaya, so the action is done to Sanaya of singing. So a song was sung by Sanaya. Now it is in the passive voice because the subject is coming last and the action is coming first. Now changing active speech to passive speech. Ram kicked the ball. The ball was kicked by Ram. So Ram kicked the ball. तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? राम है. बॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है. राम, डूअर ऑफ एक्शन राम पहले दिया गया है, सो इट इज द एक्टिव वॉइस. और ऑब्जेक्ट बॉल लास्ट दिया गया है, सो दैट इज द, इट इज द रिसीवर, सो इट इज द एक्टिव वॉइस. द बॉल वॉज किक्ड बाय राम. अभी एम्फेसिस किसके ऊपर है? ऑब्जेक्ट के ऊपर है, बॉल के ऊपर है, करेक्ट. एंड राम इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, करेक्ट. किक्ड बाय राम. सो राम हो गया, लास्ट गया है, एंड द बॉल इज गिवन मोर इंपॉर्टेंस. सो ये क्या है? दिस इज पैसिव वॉइस. चेंज ऑफ द वर्ब. सीता इज टेकिंग द डॉग फॉर अ वॉक. हु इज टेकिंग द डॉग फॉर अ वॉक? सीता. So how will you convert it into the passive voice? The dog is being taken for a walk by Sita. Then you change the pronouns. The nominative clause is used for the subject for the verb. Example: the farmer gave the cows some hay and oats. The cows were given hay and oats by whom? The farmer. So ये farmer ने दिया है. When farmer goes last, it becomes passive voice. जब farmer start में आता है, doer of the action, that is a active voice. The farmer gave honey and oats to the cows. Some honey and oats were given to the cows by the farmer. ये हो गया passive. Farmer gave honey and oats to the cows, ये हुआ active voice. Then changing interrogative sentences into the passive voice. Interrogative का मतलब है questions. Does Seema like painting? Does Seema like painting? ये कैसे कहते हैं? Is the painting liked by Seema? Did Seema like painting? Was the painting liked by Seema? So the verbs has, have, will, shall, can, may do not change their position at the beginning of the sentence when the active changes into passive. Has he done his homework? Has his homework been done by him? Question mark. The question words has, have, where, how, what, why, where, when, how do not change their position in the beginning, correct? Then changing imperative sentences to the passive. Imperative क्या होता है? They can be in the form of request, they can be in the form of making proposals. Close the door. Please give me the bottle. Generally sentences contain the request, have the word please in it, correct? So these sentences start with you are requested to. In terms of advice, you are, अगर आप advice दे रहे हो तो wear your sweater, it is, since it is cold. So you are giving advice. You are advised to wear a sweater since it is cold. In terms of command and order, start with let. Start the sentence with let. Bring in the culprits. Order दे रहे हो आप. Bring in the thieves. Bring in the wrongdoers. Let the culprits be brought in. You can change in terms of order. You are ordered to. अगर order कह रहा है, you are ordered to take permission before entering. In terms of suggestion, change the passive voice by adding the verb should. फिर a prepositional sentence. Prepositions in active form do not change their position in the passive voice. इनका position change नहीं होता है. Then is passive voice. Changing passive to active. When you change a sentence from the passive to the active voice, reverse the position of the subject and object. You can identify the doer by locating it by the phrase. तो example अगर हम लेते हैं, Ram kicked the ball. So Ram kicked the ball is the active voice because you are giving emphasis to Ram. The ball was kicked by Ram. So the ball, that is the object, now comes first and the doer of the action Ram comes later. That is how you convert the passive to active. Then is direct and indirect speech.
सो यहाँ पे यूज ऑफ द डायरेक्ट स्पीच, यूज ऑफ डायरेक्ट स्पीच हमको कैसे करनी है यहाँ पे, जस्ट दैट करेक्शन वी विल मेक, जस्ट अ मिनट. सो दिस इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. So to convey the exact words of the speaker, direct speech use किसके लिए होती है? To convey the exact words of the speaker. So generally ये आता है in open inverted commas. To supply and clarify the information, eyewitness accounts जो होते हैं, inserts dialogues in narrative and stories, defines the character. The most significant points that have been stated by a direct speech आता है उसमें. Important points जब हमको specify करने. Many direct quotes are included to convey the essence of the speaker's message. Quotes जब हम quote करते हो किसी को in open, वो होता है direct speech. Use of indirect speech हम कब use करते हैं? To avoid lengthy and confusing documentation, to bring in clarity and preciseness to the reporting, to make personal office interaction use of speech में reports of speech during the annual meetings are noted in the indirect speech. So indirect speech, generally direct speech is when you are quoting, giving the exact words of the speaker. Indirect जब हम event हो चुका है and now you are narrating it, you are giving it in the form of a report of something which has already happened, that is always given in the indirect speech. Newspaper reports use indirect speech, most often to report who said what and where. I'm busy tomorrow, ये direct speech है. She said that she was busy that day, ये हो गया indirect. You are reporting something which was already done. Now rules for changing direct speech into indirect speech. I always drink coffee. She said she always drank coffee. I am reading a book. He explained that he was reading a book. He has finished his work. She said that he had finished his work. These are converting from direct to indirect. Now reported speech contains a universal fact or a scientific truth. The tense of the verb does not change. Example क्या है? He said, honesty is the best policy. He said that honesty is the best policy. If the statement is still relevant, we can choose whether to keep the original tense or change it. ये relevant है, honesty is the best policy, ये तो general statement है, right? तो हम इसमें is को was नहीं करेंगे because it is the you keep it in the original tense itself. तो in this part, what we have seen is we have basically seen what the institute wants you to know about the grammar things. हमने थोड़े terms देखे, we understood about phrases, clauses, types of sentences, we understood about the active and passive voice, and we also understood about direct and indirect speech. तो again I'm telling you that इन सब में आपको theory कुछ भी नहीं आने वाली. In the exam you are not going to be asked about define a verb, define a gerund, define a model, define an auxiliary verb, define what is the meaning of an imperative sentence. ये कुछ भी objective theory आपको नहीं आने वाली. All this you are going to be asked only practical questions, like they will give you sentence and they will tell you change it into the passive voice या change the sentence into an active voice, या एक statement direct speech में देंगे with inverted commas or exclamation and they will tell you convert it into the indirect speech. So you they will give you sentences, they will tell you to identify ये simple sentence है या compound sentence है या complex sentence है, correct? So they are not going to be asking theory, they are going to be asking you only practical. As soon as we are done with the entire ये जो हमारे chapters है, ये ख़त्म होने के बाद we will do actual solving of an entire question paper, जहाँ पे ये सब grammar plus it can be note making, reports, letters, ये सब हम practice भी हमको देखनी है. Okay? So I hope you have understood the basic rules of grammar. आगे जाके अभी हमको देखना है about vocabulary and how we use
synonyms, antonyms, suffixes, prefixes, जो हमने already school से हमने पढ़ा है, we are just going to be revising about it. Okay, so I hope you've understood and thank you very, very much.